अगर मैं आपको समरी बताना स्टार्ट करूंगा तो आप कभी आपके हैबिट नहीं डेवलप करोगे बुक पढ़ने के लिए। बुक पढ़ना ही है। आई एम ए फर्म बिलीवर, अगर आपको लाइफ में चेंज करना है तो आपके फाउंडेशन ज़रूर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फर्स्ट फाउंडेशन आपका माइंडसेट। ट्रस्ट मी, अगर आप ये पांचों बुक भी पढ़ोगे आपको एक अमेजिंग शिफ्ट दिखेगी आपके माइंडसेट में। और एक मैं फाइनल बुक एज अ बोनस आपको रिकमेंड करूंगा फेलियर के ऊपर। 5 books everyone should read if you want to change your life। 5 किताबें, 5 बुक आपको पढ़नी है अगर आपको लाइफ में अमेजिंग चेंजेस देखने, if you want to become the best version of yourself। Hi, my name is Amol। I'm the author of the best-selling book The Magic of Failure and founder of Morning Ritual Miracles, where I've trained more than 20,000 people to become the best version of themselves, which I call as version 2.0। The first book which has changed my life, which has played an important role in my transformation journey, is The Power of Subconscious Mind। You all should read this book. One of the beautiful book where you will to understand the the power, the miracle of our mind. If you see, I have read this book at least for more than 5 times, and if you see, I'm just flipping this book, you'll see I have highlighted so many important notes. Few things, which you should read again and again is about, how to use your subconscious mind for forgiveness. Because most of the time we always hurt people, we always, हमेशा हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम forgiveness नहीं करते, and we feel कि नहीं यार मुझे नहीं करना है forgive, and lot of things that happens in a mind. So I would recommend you this book to read, because in this book the author is Dr. Joseph Murphy. This book is available in Hindi, Marathi, English, whatever language you want. This book is very very important। आप ये ज़रूर बुक पढ़िए, because ये बुक आपको सिखाएगा कि how to do visualization, how to write your goals, कैसे आपको mental blocks हटाने, what is the treasure house it within you, so many principles, how you can use your subconscious mind in your career, in your business. So this book is must. The first book, if you really want to change your mind, your belief, that's The Power of Subconscious Mind. Do read this book। The second book, which is all about habit, बिकॉज आई एम ए फर्म बिलीवर, अगर आपको लाइफ में चेंज करना है तो आपके फाउंडेशन ज़रूर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फर्स्ट फाउंडेशन आपका माइंडसेट के लिए मैं बुक रिकमेंड करूंगा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपका बिलीफ सिस्टम का इशू है तो ये बुक है। अगर आपको हैबिट का इशू है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू चेंज योर हैबिट्स, हाउ टू टेक दैट स्मॉल बेबी स्टेप, हाउ टू कन्वर्ट योर डिसएम्पावरिंग हैबिट्स इनटू एम्पावरिंग हैबिट, आई वुड रिकमेंड दिस बुक Atomic Habits। It's by James Clear, an easy and proven way to build good habits and break bad ones। Yes, it's true। ऑथर ने इसमें काफ़ी सारे आपको टेक्निक्स, how exactly the science of habit work, what is what are the social groups, how you can change your habit, if you are struggling with lot of bad habits like drinking alcohol, smoking, not going to exercise, he has if you see, there are a few things which I have highlighted, which is called habit stacking formula। आप इतने सारे concepts इसमें सीखोगे जिसमें से I'm sure if you read, if you follow these concepts, you'll change your life। I love the concept of habit loop। habit loop में concept होते हैं cue, craving, response, reward, how to do, because I don't want to explain you each and every phase, what is the author is trying to say in this book, but I want you should read this book। I don't believe in reviewing the book। अगर मैं आपको बुक रिव्यू करूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको पढ़ना है बुक्स। आई कैन ईजिली मेक लॉट ऑफ वीडियोस ऑन ऑल दिस बुक्स, द समरी ऑफ दिस बुक, बट आई डोंट बिलीव, अगर मैं आपको समरी बताना स्टार्ट करूंगा तो आप कभी आपके हैबिट नहीं डेवलप करोगे बुक पढ़ने के लिए। बुक पढ़ना ही है। अगर आपको लाइफ में चेंजेस करने हैं, यू शुड रीड दिस बुक। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है, आप ऑडियो पढ़िए। देयर आर सो मेनी ऐप्स, लेकिन अमेजॉन ऑडिबल ऐप खरीदिए, सुनिए उसको। अगर आपको सुनना अच्छा लगता है, अगर आपका ट्रैवलिंग जॉब है तो आप बुक सुनना स्टार्ट कीजिए, बट यू शुड read or you should listen to this book। Very very important book। This book can help you to develop new good habits। The second is book on habit। Third, again, अगर आपको पैसे के लेके आपका mindset का issue है, अगर if you don't know about money, this book I will recommend, Rich Dad Poor Dad। I mean, one of the amazing book। You will learn in this book about lot of things about money। For example, why financial literacy is important। मुझे कुछ भी financial knowledge नहीं था। ये बुक में से मुझे इतने कंसेप्ट मुझे पता चला है कि पैसे कैसे कमाने और
क्या होता है माइंडसेट, पुअर माइंडसेट क्या होता है, मीडियोकर माइंडसेट क्या होता है, अमीर लोग क्या सोचते हैं, हाउ दिस रिच पीपल थिंक, हाउ दे लाइक मैनेज देयर मनी, एंड दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट मनी बिलीफ एंड हाउ यू कैन हाउ लाइक यू कैन टीच योर किड्स अबाउट मनी. अगर आपके बच्चे हैं तो आप इसमें आप बच्चे को भी ये बुक रिकमेंड कीजिए. ये बुक हिंदी, मराठी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी. डू रीड दिस बुक. द नेक्स्ट बुक, अगर आपको आपका पर्पस जानना है, अगर आपको आपका what is your why, what is your purpose, so I'll recommend you this book, Start with Why, by Simon Sinek. How great leaders inspire everyone to take action. And by this book I came to know about my why, I came to know about my purpose, I came to know about my existence. One of the highly recommended book. Do read this book, Start with Why, if you're struggling to get clarity in your life and if you really want to know about your why. There's a fourth book, द फाइनल फिफ्थ बुक. अगर आपका प्रोडक्टिविटी का इशू है, अगर आप काफ़ी सारे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर कन्फ्यूज, आप मल्टीटास्किंग काफ़ी कर रहे हो, अगर आपको सीरियसली अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सीरियसली इफ यू वांट टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, आई वुड रिकमेंड यू दिस बुक, द वन थिंग, बाय this author is by Gary Keller. You should read this book, The One Thing. This book has really helped me to be laser focused on one thing at one time, because trust me, ये book में आपको पता चल जाएगा कि multitasking is a lie. It's a myth. Multitasking doesn't work. And very powerful quotes. Like I love this book. And again, I've read this book 3-4 times. You must read this book for productivity. The One Thing. ये 5 बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा. एंड ये 5 बुक आपके लाइब्रेरी में होना ही चाहिए. And you should read this book 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. Just don't read. Make a lot of notes and implement. Trust me, अगर आप ये 5 बुक भी पढ़ोगे, आपको एक अमेजिंग शिफ्ट दिखेगी आपके माइंडसेट में. और एक मैं फाइनल बुक एज अ बोनस आपको रिकमेंड करूँगा फेलियर के ऊपर, जो है मेरी बुक द मैजिक ऑफ फेलियर. Trust me, this book will help you to unlock your version 2.0 and how to live your dream life. You should love your failures, you should enjoy your failures. ये बुक में मैंने प्रैक्टिकल वेज बताया है कि आप आपके फेलियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन चेंज योर लाइफ एंड हाउ यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ये बुक अमेजोन में, और ये सभी बुक अमेजोन में अवेलेबल है. मेरी भी बुक अमेजोन पे है. एंड गो एंड रीड दिस बुक. ऑल दिस 6 बुक, 5 plus this one bonus. If you read this book, you will definitely change your life. I'm not promoting you my book, but I know how people have changed their life just by reading this book. They have got a lot of techniques and they have used this technique. It's a practical book. All the things which I have done for my transformation, मॉर्निंग रिचुअल मैंने कैसे किया, कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, कैसे गोल्स लिखना है, आपको सब ये बुक में सब प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेगी. डू रीड ऑल दिस 6 बुक बिकॉज आई एम श्योर this 6 books will help you to become the best version of yourself. I hope you enjoyed this video. और ये 6 बुक्स पढ़ने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स पे डालिए कि what were your learnings and what are the things that you will be going to implement. I hope you like this video. If you have liked this video, do subscribe to my YouTube channel because I am on a mission to transform 10 lakhs of people by helping them to become the best version of themselves, which I call as version 2.0 in all the 7 key areas of life. This is your friend Amol signing off. See you in my next video. Bye-bye. Take care.